Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 9th Canto, Chapter 5, text number 25. Evam Vidanika Guna Saraja Paratmani Brahmani Vasudeve Kriya Kalapai Samava Bhaktim Yaya Virinshan Narayang Chakare Evam Vidane Ke Guna Saraja Paratmani Brahmani Vasudeve Kriya Kalapai Samuvaha Bhaktim Yaya Virinchayan Dadayam Chakram Evam Viraneka Guna Saraja Parmatmani Brahmane Vasudeve Kriya Kalapai Samuvaha Bhaktim Yaya Virinchyan Nirayang Chakare. Next. Evam Vidane Kaguna Saraja. Evam Vidane Kaguna Saraja. Paratmani Brahmani Vasudeve. Paratmani Brahmani Vasudeve. Kriya Kalapai Samuvaha Bhaktim. Kriya Vaishnavis. So, I want to review the previous verse 24 because it helps us to understand this verse number 25. हम इसके पिछले श्लोक 24 को भी समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये समझ के हम आज के श्लोक को भी समझ पाएंगे. After 1 year, when Durvasa Muni had returned,
King Ambarish sumptuously fed him all varieties of pure food. एक वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भर पेट खिलाए And then he himself also ate. और तब स्वयं भी भोजन किया. When the king saw that the Brahmana Durvasa had been released from the great danger of being burned, जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके हैं, he could understand that by the grace of the Lord, he himself was also powerful. तो वे यह समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान हैं. He himself means that Ambarish Maharaj realized he had some potency. तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि अम्बरीश महाराज को पता चला कि उनके अंदर So शक्ति है. he himself, he could understand by the grace of the Lord, he himself was also powerful. तो वो समझ पाए भगवान से की कृपा से कि वो भी शक्तिमान हैं. But he did not take any credits, लेकिन वो किसी भी प्रकार का श्रेय नहीं लेते हैं. for everything had been done by the Lord. वो सब कुछ भगवान की कृपा समझते हैं. So let us recite the Guru Parapranams, please. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravane Pracharane Nivishesha Shunyavadi Paskatya Desatarane Om Aginata Vanindasya Gina Gina Kadaya Lakshon Manitam Gena Asmai Sri Gurave Namah Chaitanya Manubhistam Stapatem Gani Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadandiham Vandeham Sri Guru Sri Jada Panakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagatitam Zahagana Ragunitam Nitam Stam Sajaivam Sadvaitam Savadutam Parijana Zaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Zahagana Lalita Sri Vigraha Tamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopaka Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vinavanishvade Rishavanu Sutadevi Pranamami Hare Vanja Kalpa Grubascha Kripasindhu Vaivata Patinam Bhavanevyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Radha Shivasiri Gaura Bhaktivindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First, I'd like to say that it's very encouraging to see such a good turnout for Srimad Bhagavatam class this morning. पहले मैं बताना चाहूँगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इतनी भारी मात्रा में श्रीमद् भागवतम कक्षा सुनने के लिए. Actually, hearing only one or two words of Bhagavad-gita is the perfection of life. तो वास्तव रूप में भागवत का एक दो शब्द भी सुनने से जीवन की पूर्णता. So the more we hear, the more we become purified. तो जितना ज़्यादा हम सुनते हैं उतना ज़्यादा हम पवित्र होते हैं. Does anyone here think they don't have to become purified? तो यहाँ पे कोई ऐसे वक्त हैं जिनको लगता है कि मुझे पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है. You see, we all agree that we have to become purified, but how? तो हम देखते हैं कि हम सबको इस चीज की आवश्यकता है, लेकिन कैसे? The Sabda Brahm. तो ये शब्द ब्रह्म से होगा. And those of you who speak English should listen to Srila Prabhupada's tapes and bhajans and kirtans. तो आप सब में से जिनको भी अंग्रेजी भाषा आती है, उन सबको चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा गाए हुए भजन. Because I doubt that most of you know what the Bhagavatam says about the sound of the voice of a resident of Braj. तो मुझे ये संदेह है कि आप में से कितने लोगों को पता है कि श्रीमद् भागवतम में जो ब्रज का जो आवाज है, शब्द ध्वनि है, उसके बारे में क्या बताया गया है. In Goloka Vrindavan, sometimes it is said that there's all walk is dance and all talk is song. गोलोक वृंदावन के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे हर कदम एक नृत्य के समान है और हर शब्द एक गाने के समान है. So even when Krishna is walking through the forest, he's actually dancing. तो अगर कृष्ण जंगल के अंदर भी चल रहे हैं तो इसका मतलब है At least he's certainly moving in a graceful way.
और ये तो जरूर है कि वो एक अच्छे भद्र प्रकाश से चल रहे हैं। So the gopis have decorated his lotus feet with chandan. तो जो गोपियां हैं वो भगवान के चरण कमलों को चंदन से Saffron chandan, just like sometimes pujaris decorate the deities with saffron chandan on the feet. जो saffron कलर जो रंग है उससे भगवान के चरण कमलों को Krishna likes it. केसरिया रंग से। It's an eternal pastime for the devotees to decorate Krishna's lotus feet with saffron. तो ये भक्तों को भी बहुत अच्छा लगता है वो भगवान के चरण कमलों को केसरिया रंग से सुसज्जित करते हैं। So what happens when Krishna moves? तो क्या होता है जब कृष्ण चलते हैं? The particles come off. तो वो जो बिंदु हैं जो कण हैं केसरिया रंग के He's moving, and dry chandan, it tends to come off. तो जो सूख जाता है चंदन तो उससे जो कण निकलते हैं So where does it go? तो वो कहाँ जाते हैं? Does it just fall on the ground? क्या वो सिर्फ जमीन पे गिर जाते हैं? Any of you know the answer? आप में से किसी को उत्तर पता है इसका? You know the answer? What is the answer? That might be spreading in the air. And the fragments. He is telling कि वो हवा it might be spreading in the air. It might be spreading in the air. Might be. That was a good guess, first class guess. बात करें आपने अच्छा एक It's not might be, it's a fact. तो ये ऐसा नहीं कि ऐसा होता है ये बिल्कुल सच So it goes in the air. तो वो जो कण है वो हवा में जाते हैं It travels in the air. वो हवा के अंदर इधर उधर जाते हैं The Bhagavatam calls those particles of saffron chandan, calls them saffron mercy particles. That's an exact quote from the Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ये जो केसरिया रंग के चंदन के कण हैं वास्तविक रूप में वो केसरिया रंग के कृपा के कण हैं All right, so we understand that the particles are floating in the air. That was a first class guess. तो ये हम समझ पाए कि ऐसा जो कण है वो चंदन के वो हवा में इधर उधर But where does it go from there? This is the astonishing part. लेकिन वो हवा से कहाँ जाते हैं ये सबसे Anybody know where it goes from there? आप में से किसी को पता है वो वहाँ से कहाँ जाते हैं So the saffron mercy particles that are floating in the air in Goloka Vrindavan as a result of Krishna's moving his lotus feet, तो जो केसरिया रंग का जो कण है वो चंदन का जो कि हवा में इधर उधर घूम रहा है भगवान की कृपा के कारण जो चलते हैं भगवान के चरण कमल इधर उधर तो the saffron merciful particles enter into the voice of the eternal residents, the Nityasiddhi devotees of Braj. तो जो केसरिया कण है जो कि वो जो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनके द्वारा जो बोला जाता है उनकी शब्द ध्वनि के अंदर वो प्रवेश Whether you're listening to a lecture given by a Saktavesh avatar like Srila Prabhupada, चाहे आप श्रील प्रभुपाद जो कि भगवान के सत्तावेश अवतार हैं उनके द्वारा दिए गए प्रवचन को सुन रहे हैं or whether you're listening to Srila Prabhupada's bhajan and kirtan, या फिर आप श्रील प्रभुपाद के भजन और कीर्तन को सुन रहे हैं all of them are loaded with saffron merciful particles. सबके अंदर के जो केसरिया कृपा के कण हैं वो पूर्ण तरीके से If anybody doubts this phenomena, please look it up in the Bhaktivedanta database. Look up saffron mercy particles. अगर आप में से किसी को कोई संदेह है तो आप जो भक्तिवेदांत वेदाबेस है उसके Jai Radhika Raman. चेक कर सकते हैं You'll find them, saffron mercy particles. But the best way to find them is Sabda Brahma. तो आप उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है इसको ढूंढने का वो है Hearing from Prabhupada. प्रभुपाद जी से सुनना So for those of you who don't speak English, आप में से जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं there are 50 lectures by Srila Prabhupada in Hindi. तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए लगभग 50 कथाएं हैं जो कि You please inquire how you can get those lectures in Hindi. They're available. आप कृपया करके ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कैसे आपको वो They're not common, but they are available. 50 lectures. That's a lot of lectures. तो वो सामान्यतः इधर उधर नहीं मिल सकते लेकिन आपको मिल जाएंगे The fact, those of you who don't speak English, that's no excuse. You can get the lectures even by Prabhupada, but certainly the bhajan and kirtans are readily available. You must listen to the sound vibration. तो आप में से जो हिंदी नहीं जानते हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि श्रील प्रभुपाद जी ने खाली अंग्रेजी में प्रवचन दिए हैं Chaitara Darpada Marjanam Bhavagnavivapanam. So this hearing and chanting cleans out the dirty things from the heart. That is the point. Especially hearing the Sabda Brahm coming from Saktavesh avatars. तो ये जो शब्द ब्रह्म है श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमारे हृदय को पवित्र करते हैं
है। So it's very important for spiritual advancement. तो बहुत आवश्यक है भक्ति में उन्नति करने के लिए। So now let's hear the translation. तो अब हम जो इसका अनुवाद है वो सुनेंगे। So in the 24th verse we heard that Ambarish Maharaj was feeling humble. He realized his power. तो 24वें श्लोक के अंदर हमने देखा कि जो अम्बरीश महाराज हैं वो कैसे अपने आप को बहुत विनम्र समझ रहे हैं। But he did not take any credit. लेकिन वो किसी प्रकार का श्रेय नहीं लेते। This is Vaishnava. तो ये एक वैष्णव है। Just like Srila Prabhupada didn't take credit for this movement actually. जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को लेकर कोई क्रेडिट कोई श्रेय नहीं लिया। He gave all credit to his Guru Maharaj. उन्होंने सारा श्रेय अपने गुरु महाराज को दिया। Sometimes he gave the credit to his disciples also. So much what he called gratitude for their surrender and their hard work that built this movement that you are enjoying today. कई बार श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो श्रेय है अपने शिष्यों को भी दिया क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत करके इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया। From the standpoint of somebody over 70 years old, like me, tomorrow is my body will be 72 years old. अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष के थे जैसे कि मेरा So 70 वर्ष का हो गया। my only solace is that Prabhupada was over 70 when he started this movement. So by your blessings, I still have a chance to try to accomplish something before I leave this body. तो मेरे लिए ये एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे 70 साल के थे तो मैं भी कुछ न कुछ सेवा कर सकता हूँ प्रचार के कार्य में। That's why Prabhupada would write to joint letters sometimes to his disciples, my dear boys and girls. कई बार श्रील प्रभुपाद जी एक ही बातों में अपने शिष्यों को ऐसे अपने जो But they weren't little kids. They weren't little kids, you know. कि वो तो छोटे-छोटे बच्चे के समान नहीं थे लेकिन They were almost all in their 20s, वो सब early 20s. वो सब लगभग 20 से या 20 से ज्यादा वर्ष के थे। I was 21 or 22 when I first started attempting to surrender to Prabhupada. तो मेरी जो उम्र थी वो 21 से 22 साल की थी जब मैंने पहली बार श्रील प्रभुपाद को शरणागत। Some were only 16 years old. कई ऐसे थे जो कि सिर्फ 16 Just give up everything, left home, and came, chanted Hare Krishna, surrendered to Prabhupada. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मंदिर आ गए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, श्रील प्रभुपाद जी को शरणागत हो गए। Try to understand, that's who built this great movement, kids. तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि किन लोगों ने इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया। छोटे-छोटे But they were ordinary kids? लेकिन क्या वो छोटे-छोटे बच्चे थे, सामान्य बच्चे थे? Never. They were empowered by Srila Prabhupada. कभी नहीं। वो श्रील प्रभुपाद जो है आवेशित थे उनके अंदर प्रभुपाद की शक्ति का आवेश था। So, in this way, Prabhupada did not take the credit. Just like Ambarish Maharaj, Prabhupada did not take the credit. He understood it was the mercy of the Lord and the mercy of his Guru Maharaj and the kindness. He considered to be the kindness of his disciples. That's how he viewed his disciples. Kind persons that were helping him, like helpful children. That's how he saw his disciples. Still does. श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे अम्बरीश महाराज यहाँ पे श्रेय नहीं ले रहे इसलिए वो उसी प्रकार से उन्होंने भी कभी श्रेय नहीं लिया इस आंदोलन को लेके। वो अधिकतर अपने गुरु महाराज को श्रेय देते थे या फिर अपने शिष्यों को श्रेय देते थे क्योंकि वो दयालुता पूर्वक उन सब ने बहुत मदद। It's not that Srila Prabhupada is dead and gone. He still feels that way. From the spiritual world, he still feels that way, that he's grateful to all of you. Just coming here, the Bhagavad-gita, he's grateful. From the spiritual world, he's fully active 100%. It is not that he's dead and gone. तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि मृत हो गए हैं और वो चले गए हैं। यहाँ पे आप सब लोग जो भागवत कथा में आए हैं, प्रभुपाद जी ये देख रहे हैं और उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सब सुनने के लिए। Since most of you haven't heard this, so I will tell an important, true anecdote. तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने ऐसा सुना ना हो, तो मैं आपको श्री प्रभुपाद जी का एक छोटा सा कथा बताऊंगा। My god brother Prithu Prabhu, he was in Vrindavan at the time that Prabhupada left his body. तो मेरे जो गुरु भाई थे पृथु प्रभु जब श्री प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागा वृंदावन के अंदर तो वहां पे थे उस समय। And so he was present when they dug the pit in the ground and lowered Srila Prabhupada's body into the pit. उपस्थित थे जब वहां पे गड्ढा खोदा गया और श्री प्रभुपाद जी के शरीर को वहां पे डाला गया। The process is with sannyasis and saints that the body is placed into salt,
तो वो जो तरीका था वो इस प्रकार से था कि श्रील प्रभुपाद जी के शरीर को पहले नमक का लेप लगाया गया। The salt preserves the body. It dries, of course, mummifies. You know, mummy, like the Egyptian. तो जैसे मिश्र देश में मम्मीज होते थे पहले के जमाने में, तो जो नमक होता है, नमक का लेप वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। So because of the salt, the body is not attacked by bacteria, worms, etc. तो नमक के लेप के कारण जो शरीर है वो बैक्टीरिया और इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनके प्रकोप से बच जाता है। So that night, my godbrother had a dream. तो उस रात को मेरे जो गुरु भाई थे उनको एक स्वप्न आया। In the dream, he saw himself standing next to the pit. तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो जो गड्ढा था जहाँ प्रभुपाद जी को समाधि दी गई थी उसके पास खड़े थे। In the dream, suddenly Srila Prabhupada walked up next to him तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी उनके पास में आके खड़े हो गए and said, "They think that I am dead. और उनको कहा कि इस लोगों को लगता है कि मैं मृत हो चुका हूँ। Please meditate on that." कृपया इस पे ध्यान दीजिए। Prabhupada was very sober. प्रभुपाद बहुत ही गंभीर थे। He was underscoring the fact, as stated crystal clear by Srila Bhaktivedanta Thakur, तो भक्तिवेदांत ठाकुर द्वारा बिल्कुल साफ-साफ जो संदेश दिया गया है उसको बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। he reasons ill who thinks that Vaishnavas die. तो ऐसा गलत सोचते हैं जिनको लगता है कि जो वैष्णव हैं वो मृत होते हैं। He, of course, made this statement in the 1800s before recording devices were invented. तो हालांकि श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने ये जो संदेश है वो 18वीं शताब्दी से पूर्व दिया जब कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता था। But he said he reasons ill who think that Vaishnavas die, who are living still in sound. तो उनको ऐसा जो लोग सोचते हैं कि जो वैष्णव हैं मृत होते हैं वो गलत सोचते हैं क्योंकि जो वैष्णव हैं हमेशा अपनी वाणी के रूप में जीवित रहते हैं। That's my point from the beginning, that this is Sabda Brahm, transcendental sound vibration. शुरुआत से मेरा ऐसा कहना है कि ये जो शब्द ब्रह्म है ये दिव्य शब्द ब्रह्म है। It's not that all of you have not met Prabhupada, you are present in meeting him. You are in his darshan, not just because the Murti is present, but because you are hearing Bhagavad-gita, that is also darshan with Srila ऐसा Prabhupada. नहीं कि आप में से कोई कहते हैं कि हम प्रभुपाद जी से नहीं मिले हैं और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप श्री प्रभुपाद जी का विग्रह है इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि आप सब श्री प्रभुपाद जी की वाणी को सुन रहे हैं इस प्रकार से आप श्री प्रभुपाद से मिल रहे हैं। Because you're hearing from Srila Prabhupada's books, that is also a direct association with Srila क्योंकि Prabhupada. आप श्री प्रभुपाद जी के पुस्तकों को सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वो भी श्री प्रभुपाद जी का साक्षात दर्शन है। Hundreds of times Srila Prabhupada said, "I am present in my books." तो कई सैकड़ों बार श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपनी पुस्तकों में उपस्थित हूँ। So it is another manifestation of Acharya there is Mahanta Guru is a personal form, moving personal form, so to speak, external form. तो एक दूसरा जो रूपांतरण जो एक आचार्य का होता है जो महंत गुरु के रूप में होता है। Then there is book Bhagavat, that is another manifestation of Krishna. The original Guru is Krishna himself, who manifests in the Shastra. तो जिस प्रकार से किताब पुस्तक भागवत होता है उसी प्रकार से कृष्ण भी अपने आप को यहाँ पे धराधाम के अंदर उपस्थित है। So Krishna is Adi Guru, कृष्ण क्योंकि आदि गुरु हैं, original Guru. जो वास्तविक गुरु हैं। So then it is continued through disciplic succession. तो वो गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता है। So now we'll read from the translation. अब हम अनुवाद करेंगे। Previously, he was saying that everything has been done by the Lord. पहले ऐसा कहा गया है कि सब कुछ भगवान के द्वारा किया जाता है। So Ambarish Maharaj understood that he was not the doer, that he was just the instrument in the hands of the Lord. He understood this point. We also have to understand this point. तो अम्बरीश महाराज ये समझ गए कि हम सब कर्ता नहीं हैं, हम सब सिर्फ भगवान के हाथों में एक माध्यम है। तो हम सबको भी इस चीज को समझना है कि हम सब भी कर्ता नहीं हैं। So therefore, Srila Shukadeva Goswami says, in this way, meaning the mood of dasanudas. तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस भाव से कि हम दासानुदास हैं। That's why this verse begins by saying, in this way, meaning a mood of total humility and understanding that he's not the doer. You see, he's just declared in the previous verse that everything has been done by the Lord. So similarly,
we must understand this point, otherwise, sochati kanchati. तो इस श्लोक की शुरुआत होती है इस प्रकार से। इसका मतलब ये है कि जो पिछला श्लोक है उसको आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ये भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं दासानुदास का। How many of you know the meaning sochati kanchati? आप में से कितने लोगों को ये शब्द सोचती और कांक्षती इसका अर्थ पता है? So congregation, you have got your homework cut out for you. This is month of Gita Jayanti. तो यहाँ पे जो उपस्थित गृहस्थ भक्त हैं, It means that it's time for you to study Bhagavad-gita, is it not? Besides distribute, Shastradan, distribute. तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ये ढूंढ कर लाना है, क्योंकि ये गीता जयंती का महीना सिर्फ पुस्तक बांटने के लिए नहीं, गीता ज्ञान को अर्जन करने के लिए। You're getting so much mercy, you realize only 0.005% of how much mercy you're getting from Prabhupada, Vaishnava Acharyas, and from Radha Raman, Krishna Balaram. You only realize about 0.005% how much mercy you're getting. We, in general, have no idea how much we're being showered by infinite amounts of mercy. तो आप सबको ये पता नहीं, ज्ञात नहीं है कि आपको कितनी कृपा मिल रही है, लेकिन आप सिर्फ 0.005% ही जो कृपा है उसको ले पा रहे हैं। कृपा भरपूर मात्रा में उपस्थित है, लेकिन आप सब उसको ले नहीं पा रहे। Very chota endeavor, very small endeavor, enables us, in connection with Srila Prabhupada, under the shelter of his lotus feet and the Vaishnavas, to attain unlimited mercy. But we don't understand this point. We get only a fraction of it, but try to meditate on this point. हमारे एक छोटे प्रयास से हमें प्रभुपाद जी की बहुत कृपा मिल सकती है। हम इस चीज को नहीं समझ पाते और इसलिए सिर्फ हम 0.005% पे अटक जाते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। A pessimist sees a glass of water as being half empty. तो जो लोग निराशावादी होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि जो आधा भरा हुआ ग्लास है जिसके अंदर पानी है, वो ऐसे सोचते हैं कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है। An optimist sees the glass of water as half full. लेकिन जो आशावादी होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ये जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। It's called the power of positive thinking. तो इसको ऐसा बताते हैं कि There was a famous Western theist wrote a very famous book called The Power of Positive Thinking. तो पाश्चात्य देशों में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है कि अच्छी सोच का प्रभाव का शक्ति। So in this way, Shukadeva Goswami's meaning is that in the mood of humility and understanding the Lord as a doer, that is what in this way means. तो इस भाव के साथ अम्बरीश महाराज ऐसा सोचते हुए कि वो करता नहीं है, वो सिर्फ एक माध्यम है, ऐसा कह रहे हैं। Because of devotional service, Maharaja Ambarish, who was endowed with varieties of transcendental qualities, was completely aware of Brahman, Parmatma, and the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे बताते हैं कि परम सत्य की अनुभूति होने के कारण जो अम्बरीश महाराज हैं वो जान पा रहे थे कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान ये तीन रूप में जो भगवान है वो प्रकट होते हैं। And thus he executed devotional service perfectly. और इस प्रकार से उन्होंने जो भक्ति है उसको पूर्ण रूप से किया। So from this statement by Shukadeva Goswami, it's clear that Maharaja Ambarish was fully self-realized soul, because this is complete. If you know Brahman by revelation, Brahman, Parmatma, and Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, that means full self-realization. तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के इस कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि अम्बरीश महाराज थे वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार में स्थित भाव थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस बात को पता चल गया कि भगवान इस तीन रूप में उपस्थित है, इसका मतलब है कि वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर रहा है। So the next statement is that thus he executed devotional service perfectly. तो अगला जो कथन है वो ऐसा है कि इस प्रकार से उन्होंने भक्ति के कार्य को अच्छे से किया, पूर्ण रूप से। Perfectly means infallibly, without mistake. In this context, it means without mistake. There are many definitions of perfection, but in this case, the context of what Shukadeva Goswami is saying is that he was rendering perfect, pure devotional service without mistake. तो पूर्ण रूप से कहने का मतलब ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज के यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि अम्बरीश महाराज द्वारा जो भक्ति के कार्यों को किया गया उसमें किसी प्रकार की कोई गलती या कोई खराबी नहीं थी। Now the next statement by Srila Shukadeva Goswami is most amazing. तो अगला जो कथन है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। Because of his devotion,
He thought that even the topmost planet of this material world no better than the hellish planets. तो अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक के समान लगने लगा। I'll read that again as Maharaja Ambarish इसका मतलब है अम्बरीश महाराज यहाँ पर thought even the topmost planet of this material world no better than the hellish planets. तो ऐसा सोचते हैं कि इस भौतिक जगत का जो सर्वोच्च लोक है वो भी नरक के समान है। That's astonishing. तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। Because we have no idea how pleasing, how much pleasure, how much even bliss there is on the highest planets. Of course, highest planet is Brahmaloka. तो हमें से कई लोगों को शायद ये पता भी नहीं है कि जो उच्च लोक हैं उनके अंदर किस किस प्रकार के It's not subject to destruction when all the other planets are destroyed किस प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, हालांकि जो until the grand devastation. जब तक कि जो पूर्ण रूप से Of course, when Lord Brahma dies, then his planet is also destroyed. जब पूरी सृष्टि का सर्वनाश होता है तो जो ब्रह्मा की Otherwise, मृत्यु होती है फिर सारे लोगों का we would have no idea by speculation what is Brahmaloka like. How nice is it? What a pleasant place it is, as good as Vaikuntha almost. तो हमें शायद इसका अनुभूति नहीं है, इसका सोच नहीं है कि कैसा कितना आनंदमय स्थान है ब्रह्मलोक, वो लगभग वैसा ही है जैसे वैकुंठ लोक है। Brahmaloka is saturated with pure Krishna consciousness. तो जो ब्रह्मलोक है वो पूर्ण रूप से आवेशित है पूर्ण भगवान के भक्ति से, कृष्ण भावनामृत से। Because Lord Brahma is Acharya. क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो आचार्य हैं। In fact, he's the founder Acharya of this Krishna consciousness movement. That is to say, he is an original devotee, having been trained personally by Lord Vishnu. His guru is Govind Vishnu. क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रथम संस्थापक आचार्य हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के, क्योंकि वो पहले पुरुष थे जिनको भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ने स्वयं आदेश दिया। So if, Garuda is right here, if somehow or other you could hear the voice of Garuda, he said, come on, let's go I'll take you up to Brahmaloka. तो यहाँ पे गरुड़देव उपस्थित हैं और अगर आप इनकी वाणी को सुन पाए तो वो कहेंगे ऐसा कि चलो हम आपको ब्रह्मलोक लेके चलते हैं। How many of you would like to go? आप में से कितने लोग जाना चाहेंगे? That's okay, but that's a trick question also. Because here Ambarish Maharaj is feeling that the topmost planet of the material world is no better than the hellish planets. So then, why we want to go there? तो ये एक तार्किक प्रश्न था, अम्बरीश महाराज कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक है वो भी नरक के समान है, तो फिर क्यों जाएं वहाँ पर? So we'll read from Prabhupada's purport. तो हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को An exalted and pure devotee like Maharaj Ambarish is in full awareness of Brahman, Parmatma, and Bhagwan. महाराज अम्बरीश जैसा महान एवं शुद्ध ब्रह्म परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भली भांति परिचित रहता है। In other words, a devotee of Vaishnava Krishna is in full knowledge of the other features of the absolute truth. दूसरे शब्दों में वासुदेव कृष्ण का भक्त परम सत्य के अन्य स्वरूपों से अवगत रहता है। So this means pure devotee. इसका मतलब है शुद्ध भक्त। Because we have some knowledge, but our knowledge is not complete. It's subject to imperfections. But if we improve the quality of our hearing, then we can become perfect. क्योंकि हमारा ज्ञान जो है अभी अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो हम पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। That means improving the quality of our downloading also, not just hearing the sound, but the quality of our downloading we have to improve. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ श्रवण करना, हमें अपना ये जो श्रवण करके उसको उसकी अनुभूति या उसको समझने का जो प्रयास है उसको और अच्छा बनाना पड़ेगा। So the absolute truth is realized in three features: Brahman, which of course means the impersonal Brahma Jyoti, the effulgence of the Lord. ब्रह्म परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में की जाती है। ब्रह्म का मतलब है कि जो भगवान की जो दिव्य ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, उसके बारे में। If you want to understand Brahman in perspective as differentiated from the Mayavadi conception, their hankering is after Brahman. They have no interest in Krishna actually. तो जो मायावादी लोगों की सोच होती है ब्राह्मण भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसको लेके, जो कि उनका
जो वास्तविक जो लक्ष्य है जीवन का, अगर आप उससे अलग सोचेंगे इस ब्राह्मण को तो But if you actually want to know what is Brahman, you have to read Ishopanishad. One of the most अगर आप वास्तविक रूप में जो ब्रह्म ज्योति उसको समझना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ईशोपनिषद. One of the clearest explanations of what is Brahman is given succinctly in Sri Ishopanishad. तो सबसे साफ सुथरा जो ब्राह्मण का समझ है वो ईशोपनिषद के अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार से दिया गया है. He's senior devotee, so he's shaking his head like this because he knows it's true that the most perfect explanation of Brahman, of course there are all kinds of explanations throughout the Shastra, Vaishnava explanations. तो क्योंकि प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हैं इसलिए जानते हैं कि जो श्री ईशोपनिषद है उसके अंदर बहुत ही साफ सुथरा अनुवाद दिया गया है ब्रह्म ज्योति का. So he's confirming, yes, it is the most perfect explanation of Brahman. Why? Because he's read Ishopanishad. तो क्योंकि इन्होंने श्री ईशोपनिषद पढ़ा है इसलिए ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ईशोपनिषद के अंदर जो ब्रह्म ज्योति है उसका. How many of you have read Sri Ishopanishad? आप में से कितने भक्तों ने पढ़ा है श्री ईशोपनिषद ग्रंथ को? Mostly temple devotees. तो अधिकतर जो है मंदिर में रहने वाले भक्त उन्होंने. I have to tell you that I took initiation from Srila Prabhupada in 1968. तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैंने 1969 में श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण किया. Srila Prabhupada was still translating the Srimad Bhagavatam, of course, श्रील प्रभुपाद उस समय भी श्रीमद् भागवतम का जो अनुवाद है वो कर रहे थे. because he was translating it up until the time of his departure. क्योंकि वो अपने जो धराधाम से जब तक श्रील प्रभुपाद जी थे उस समय तक श्रीमद् भागवतम का. That means by 1969 he had not got very far in the translation of Srimad Bhagavatam beyond the first canto, and I don't know how much further he had gotten by 1969, not very far. तो इसका मतलब ये है कि सन 1969 तक श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का बहुत आगे तक अनुवाद नहीं किया था. शायद प्रथम स्कंद से और थोड़ा आगे तक, मुझे पूरा तो नहीं पता लेकिन बहुत आगे तक नहीं गए थे. The other volumes of the Srimad Bhagavatam were released substantially after Srila Prabhupada came to America with a few copies of his original translation and printing in India. तो श्री प्रभुपाद जी के भागवतम के जो अन्य स्कंद थे उनका प्रकाशन उनके जो न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद हुआ, जो उनका वास्तविक जो अनुवाद था जो कि प्रथम स्कंद का था. I was very fortunate because when I first started visiting the temple in San Francisco in 1967, I had been a university student. तो मेरा सौभाग्य था कि जब 1967 के अंदर पहली बार मैं सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अंदर गया. I was an intellectual, so the Bhagavatam, the first three volumes of first canto were available. What Prabhupada had brought to San Francisco in his trunk, when he came to San Francisco, he brought an aluminum trunk full of his original Bhagavatams. तो मैं क्योंकि बुद्धिजीवी था तो जब श्री प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे उस समय उनके पास एक पूरा ट्रंक था जिसमें श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 3 भाग में अनुवाद था. Try to understand. प्रभुपाद जी आए थे अमेरिका के अंदर. I was a brand new, uninitiated devotee. You get that? I was an uninitiated devotee, brand new. आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं बिल्कुल ही नया भक्त था और बड़ी दीक्षा भी नहीं हुई थी उस समय. I bought those books and I devoured them. तो मैंने वो पुस्तकें खरीदी और मैं पूर्ण रूप से उन पुस्तकों को I read through them through and through, and I relished them and I downloaded. तो मैंने उस पूरी पुस्तक को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ा और उसको अपने अंदर समझने का, समाहित करने का प्रयास किया. Nowadays, so many devotees thinking I have to be a 10, 15, 20-year devotee before I approach Srimad Bhagavatam. तो आजकल ऐसा भक्तों को लगता है कि जब तक उनको भक्ति में 10 साल, 15 साल या 20 साल नहीं हुए तब तक वो श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ सकते. You think I'm exaggerating? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा. In one of ISKCON's most intellectual temples, ISKCON के जो सबसे बुद्धिजीवी मंदिर है उनके अंदर भी, I won't say the name of which temple it was, मैं मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन one 15-year devotee एक 15 साल पुराना भक्त approached me after class तो वो भागवतम कक्षा के बाद मेरे पास आए and confided that he was not reading in Srimad Bhagavatam. और मुझे बताया कि वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं कर पाए. 15-year devotee. 15 साल पुराने भक्त. He had some maha misunderstanding. He thought he was not authorized by
sadhus, by Vaishnavas, by his superiors. He thought he was not authorized to read the Bhagavatam after 15 years. What is this nonsense? उनको ऐसा लग रहा था कि उनको प्रमाणित नहीं किया गया, उनको प्रमाणित नहीं किया गया श्रीमद् भागवतम के अध्ययन करने के लिए. So Prabhupada brought the Bhagavatam from the day one, and he was happy to distribute it, and I was fortunate because I bought it, and there were no senior devotees to tell me, no, you're not advanced enough to approach the Bhagavatam. There was Jayananda, there were a few other senior devotees. They weren't senior, they were only 1 year senior to me. There was no big senior devotees in 1968 or 67. There simply were not. तो श्री प्रभुपाद जी ने पहले दिन से श्रीमद् भागवतम पढ़ने के ऊपर जोर दिया, और मेरा सौभाग्य था कि मैं जब पहली बार आया तो मैंने श्रीमद् भागवतम खरीदा. और ऐसा नहीं कि उस समय जो भक्त थे वो मना करते थे, और हालांकि उस समय जो वरिष्ठ भक्त थे वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल पढ़ाते थे, जैसे जयानंद प्रभु. So I didn't know any better than to study Srimad Bhagavatam. Nobody told me, no, you're too neophyte, you can't. So nobody said like that, so I didn't know any better. So I studied Srimad Bhagavatam wonderfully. ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे बोला कि अरे तुम तो अभी बहुत है भक्त, तुम भागवतम नहीं कर सकते. तो इस प्रकार से मैंने भागवतम पढ़ना शुरू किया. I actually relished it, even though it was brand new to Krishna consciousness, uninitiated. और मुझे बहुत आनंद आने लगा श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, हालांकि मैं बिल्कुल नया था और मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी उस समय. I actually was able to relish the Srimad Bhagavatam, brand new to Krishna consciousness. वास्तविक रूप में श्रीमद् भागवतम का आनंद ले पा रहा था, हालांकि मैं बिल्कुल नया था. What about you? आपका कहना है? How many of you are ready to commit to reading Srimad Bhagavatam? आप में से कितने लोग इस बात? That's great. See, by the mercy of the Vaishnavas and the mercy of Srila Prabhupada, certainly you can read Srimad Bhagavatam. Of course you should read Bhagavad-gita. Of course you should read Nectar Devotion. You should read these other books. Of course, but you should not neglect Srimad Bhagavatam on the plea that I'm not advanced enough. No. Prabhupada never once said like that. Otherwise, why introduce it? First book he introduced. Why? Before Bhagavad-gita he introduced Bhagavatam. Certainly. तो बहुत अच्छा लगा आप में से कई लोग पढ़ना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम. तो वैष्णव की कृपा से और गुरु की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ पाएंगे. और ऐसा नहीं कि हमें अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ना, भगवद गीता और अन्य ग्रंथों को भी पढ़ना है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को किसी भी प्रकार से उसको. So probably in 1968, Srila Prabhupada had interrupted his translation of Srimad Bhagavatam to translate and publish Sri Upanishad. This is my point. He interrupted his translation of Bhagavatam to translate and print Sri Upanishad. So 1968 में श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपना श्रीमद् भागवतम का जो अनुवाद कार्य था उसको रोककर श्री ईशोपनिषद का अनुवाद किया और उसको प्रकाशित करने का निर्देश दिया. So when it was published in 1969, there was a different attitude. I'll tell you flat out, I'll tell you bluntly, there was a different attitude. You should have the attitude that we had in 1969. सन 1969 में जो भक्त थे उनका एक अलग प्रकार का सोच होता था. आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार का सोच आप सब भी. We devoured the Upanishad. We devoured it. तो हम लोग पूरे तरीके से ईशोपनिषद We studied it carefully. उसको पढ़ा, हमने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझने का प्रयास किया. There was transcendental competition as who could perfect the chanting of the mantras the fastest, who could learn, who could perfect it the most quickly. There was transcendental competition between the devotees. Who could learn and chant these shlokas best, fastest. तो भक्तों के बीच एक दिव्य स्पर्धा शुरू हो गई कि कौन श्री उपनिषद के अंदर जो श्लोक हैं उसका अच्छे प्रकार से उच्चारण कर पाएगा और कौन जो है सारे श्लोकों को याद कर पाएगा. एक दिव्य स्पर्धा भक्तों के बीच शुरू हो गई. My godbrother Mahatma Prabhu, who of course you know is initiating guru in ISKCON now, he was one of the new devotees who I was competing with him. How can we perfect the chanting of the shlokas? And we were chanting every day. Prabhupada wanted, we were chanting the shlokas every day. जो महात्मा प्रभु हैं जो कि अभी दीक्षा गुरु के रूप में हैं ISKCON आंदोलन के अंदर, उस समय वो नए भक्त थे और मैं और उनकी स्पर्धा थी कि हम दोनों में से कौन इन श्लोकों का बहुत अच्छे से उच्चारण कर पाएगा और इसको याद कर पाएगा. And in 1971, when the first wave of devotees started falling away
from Prabhupada. We couldn't imagine such a thing. We thought it was a one-way door, one-way street, that anybody coming, he wasn't called Prabhupada yet in those days, anybody coming to Swamiji would never leave, we thought. सन 1971 में जब पहली बार ऐसा लहर आया कि भक्त श्रील प्रभुपाद से अलग हुए, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हमें लगता था कि ये सिर्फ एक तरफ का रास्ता है कि हम बस आ गए तो आ गए श्रील प्रभुपाद जी के स्मरण के अंदर। But when the first wave of devotees began leaving Prabhupada in 1971, Prabhupada gave a prescription at that time. तो जब पहला लहर आया ऐसा कि हम लोग दूर जाने लगे, This is worth noting, 5 classes a day. तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही घनिष्ठ निर्देश दिया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा 5 कक्षा एक दिन के अंदर। Shrimad Bhagavatam, Sri Ishopanishad, Nectar Devotion came out, I think it was also in 1969, Nectar Devotion. Huh? Not sure. 70? No, it was earlier. Nectar Devotion was printed. So in 1971, the devotees were to study. The prescription was to study every day, 5 classes a day, Shrimad Bhagavatam, Nectar Devotion, Sri Ishopanishad, Bhagavad-gita, of course. तो ये 5 ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने सब भक्तों को बोला 1978 में पढ़ने के लिए श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद, श्रीमद् भगवद-गीता और भक्ति रसामृत सिंधु। And teachings of Lord Chaitanya, because the Chaitanya, it was years later चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, क्योंकि वो सिर्फ before the Chaitanya Charitamrita would not be translated and released until many years later. तो जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है वो बाद में आया था, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, teachings of Lord Chaitanya, So I'll complete reading from the purport. A devotee of the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, knows everything, Vasudeva Sarvamiti, because Vasudeva Krishna includes both Parmatma and Brahman. भगवान वासुदेव का भक्त सब जानता है, वासुदेव सर्वमिति, क्योंकि वासुदेव कृष्ण में परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों निहित रहते हैं। One does not have to realize Parmatma by the yoga system. For the devotee, always thinking of Vasudeva is the topmost yogi, yoginam api sarvesham. मनुष्य को योग क्रिया द्वारा परमात्मा की अनुभूति नहीं करनी होती, क्योंकि सदैव वासुदेव का ध्यान करने वाला भक्त सर्वोच्च योगी है, योगी नाम अपने सर्वेशम। So, therefore, one who takes up Krishna consciousness, who studies in Prabhupada's books, their life is most perfect. जो भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ते हैं और श्री प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनका जीवन पूर्ण हो जाता है। So, in the next sentence, Prabhupada says, as far as Gyan is concerned, if one is perfect devotee of Vasudeva, he is the greatest Mahatma, Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha. जहाँ तक ज्ञान का संबंध है, यदि कोई वासुदेव का पूर्ण भक्त है, तो वह सबसे बड़ा महात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। A Mahatma is one who has full knowledge of the absolute truth. महात्मा वह है जिसे परम सत्य का पूरा ज्ञान हो। We should not misunderstand this statement. Say, no, I don't have full knowledge of the absolute truth. I'm an ignorant fool. What do I know? हमें इस कथन को गलत रूप से नहीं समझना चाहिए। हमें भी अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। That may be so. But by hearing Shravanam, we can become knowledgeable by hearing. Maybe not fully realized immediately, but with time, certainly. हो सकता है हम तुरंत पूर्ण ज्ञान को प्राप्त ना कर पाए, लेकिन धीरे-धीरे श्रवण के माध्यम से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएंगे। Again, Prabhupada is emphasizing what Shukadeva Goswami has made clear, that Ambarish Maharaj was a self-realized soul. तो यहाँ पे फिर से प्रभुपाद जी इस बात के ऊपर जोर देते हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने महाराज के बारे में कहा कि वो पूर्ण That Ambarish Maharaj, being a devotee of the personality of Godhead, was in full awareness of Parmatma, Brahman, Maya, the material world, the spiritual world, and how things are going on everywhere. इस प्रकार महाराज अम्बरीश भगवान का भक्त होने के कारण परमात्मा, ब्रह्म, माया, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत तथा सर्वत्र घटित होने वाले घटनाओं से पूरी तरह अवगत थे। Everything was known to him. सब कुछ पता था। So these are the symptoms of a fully self-realized soul.
there is no avidya or ignorance. तो ये पहचान है जो भगवान के पूर्ण आत्म साक्षात्कार में स्थित भक्त हैं उनके। Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. Because of the devotee knows Vasudeva, he knows everything within the creation of Vasudeva. Vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम् भवति। वासुदेव को जानने के कारण उनका भक्त वासुदेव की सृष्टि के भीतर हर वस्तु को जानता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। Well, you may say, but I'm very low, I don't know anything about anything. That's why we have to hear from Prabhupada and his representatives. We have to hear. That's the only way. Nasteva, Nasteva, Nasteva. Mahaprabhu makes it clear. Nasteva, Nasteva. The Shrabda Brahma, we have to hear the holy name, we have to hear the Shastra. There's no other way out. तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम अभी नए हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद से श्रवण करके जान सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नास्तेव नास्तेव नास्तेव, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का श्रवण के अलावा। Such a devotee does not give much value to the higher standard of happiness within the material world, like the heavenly planets. ऐसा भक्त इस भौतिक जगत के भीतर सुख के सर्वोच्च स्तर को कोई महत्व प्रदान नहीं करता, जैसा कि जो स्वर्ग लोक हैं। Because he is fixed in devotional service, a devotee does not regard any position in the material world as important. भक्ति में स्थित रहने के कारण भक्त इस जगत के किसी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं मानता। Srila Prabhupada Saraswati has therefore written in the Chaitanya Chandamrita, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है चैतन्य चरितामृत के अंदर, for one who becomes a pure devotee through devotional service to great personalities like Chaitanya Mahaprabhu, Kaivalya, or merging into Brahman appears to be no better than hell. ऐसा व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान पुरुष की भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त बनता है, उसके लिए कैवल्य अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना नरक तुल्य है। As far as the heavenly planets are concerned, to a devotee they are like a phantasmagoria or will-o'-the-wisp. And as far as yogic perfection is concerned, a devotee does not care a fig for such perfection, since the purpose of yogic perfection is achieved automatically by the devotee. भक्त के लिए स्वर्गलोक आकाश पुष्प के समान है और सिद्धि की तो वह तनिक भी परवाह नहीं करता, क्योंकि भक्त को योग सिद्धि का उद्देश्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। This is all possible when one becomes a devotee of the Lord through the medium of Chaitanya Mahaprabhu's instructions. ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के माध्यम से भगवत भक्त बन जाता है। That's why Srila Prabhupada published Teachings of Lord Chaitanya in 1969. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 1969 में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इस पुस्तक को प्रकाशित की। So we can understand what is the essence of Krishna consciousness, because that book contains Mahaprabhu's instructions to Rupa Goswami, Sanatana Goswami at Prayag and so forth, and conversation with Ramananda Roy. All that's contained in Teachings of Lord Chaitanya. So if you are not ready to go into Chaitanya Charitamrita yet, at least read Teachings of Lord Chaitanya. Again, the same point, Prabhupada introduced it in 1969, so we can understand what are the teachings of Lord Chaitanya. Very important, so do it. तो अगर हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट हमें ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नामक पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के So we'll stop there. का वर्णन है और साथ साथ रामानंद राय के साथ जो उनका संवाद है उसका वर्णन है, तो हमें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। Anybody have any questions? आप में से किसी का कोई प्रश्न है? No question means you understood everything perfectly. आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। That's very good. तो ये बहुत अच्छा है। Shri Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Nitya Gaur Premanandi Hari Hari Bolo. एक प्रश्न है कि बस मेरे ध्यान से आप में से कितने भक्तों के पास श्रीमद् भागवत ग्रंथ है? कितने भक्तों के पास नहीं है? तो आपके लिए सुनहरा मौका है, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है और स्वयं महाराज के द्वारा ऑटोग्राफ ये श्रीमद् भागवतम आप ले सकते हैं अभी, अगर आप लेना चाहें। ये बहुत सुनहरा मौका है। इस गीता पाठन मंथ के अंदर श्रीमद् भागवतम और भगवद-गीता को लेना, पढ़ना, वितरण करना बहुत शुभ है। आप सब श्री महाराज भक्तिवेदांत